mercy of God is great and is abundant. और जो रहम है वो खुदा का रहम बहुत अजीम है. God operates with man from the seat of mercy. और जो है खुदा जो है रहम करने के लिए लोगों को तैयार है. खुदा लोगों पे रहम करने के लिए. If we open to the book of Job chapter 4 verse 18. Job chapter 4 verse 18. Job chapter 4 verse 18. Sister Roma, you can open or read it, or Sister Jawaria. Job chapter 4 verse 18. You can read, Sister Jawaria, or anybody that sees it first. Job chapter 4 verse 18. 18. Behold, he put no trust in his servants, and his angels he charged with folly. देख, उसे अपने खादमों का एतबार नहीं और वो अपने फरिश्तों पर हिमायत को आयद करता है. Amen. So you can see that even the angels of God, they are not perfect. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खुदा के जो फरिश्ते हैं वो भी बिल्कुल ठीक नहीं हैं, परफेक्ट नहीं हैं. Then read verse 19. How much less in them that dwell in house of clay, whose foundation is in the dust, which are crushed before the moth. फिर भला उनकी क्या हकीकत है जो मिट्टी के मकानों में रहते हैं, जिनकी बुनियाद खाक में है और वो पतंगे से भी जल्दी पिस जाते हैं. So that place is telling us that how much more we human beings that dwells in the clay, if angels that are spirit, if they are not perfect before God, if God charges them with folly, if God does not put his trust in them, how much more we that dwelleth in the house of clay, in the flesh. और जब आप देख सकते हैं कि जो मिट्टी के घरों में रहने वाले भी जो है ठीक नहीं है, मतलब कि वो भी, उनकी भी बुनियाद कच्ची है, तो आप, और फिर इसी तरीके से आसमान के फरिश्ते भी हैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, तो आप क्या जो है ना कह सकते हैं. Look at Job 25 verse 5. Job 25 verse 5. Job chapter 25 verse 5. Behold, even to the moon, and it shineth not. Here the stars are not pure in his sight. देख, चांद में भी रोशनी नहीं और तारे उसकी नजर में पाक हैं. Then verse 6. How much less men there that is a worm, and such of man which is a worm. फिर भला इंसान का जो महज कीड़ा है और आदमजात का जो सिर्फ कर्म है ना कर. So even the moon, the star, the sun, they are not pure before God. How much more man that is just an ordinary worm. और आप इस तरीके से कह सकते हैं कि एक इंसान पाक हो सकता है जबकि चांद और तारे भी पाक नहीं हैं. Look at Job 15:15. Job chapter 15 verse 15. Job 15 verse 15. Behold, the put no trust in his saints, yea, the heavens are not clean in his sight. देख, वो अपने कसीदों का एतबार नहीं करता, बल्कि आसमान भी उसकी नजर में पाक नहीं. So we can see from that place that even we that are called to be saints, if he does not operate with us by mercy, we are not clean before him. It is mercy of God and his grace that made him to accept us as saints. और यहाँ पे आप देख सकते हैं. Hello? और So we need God's mercy. और इसी तरीके से आप देख सकते हैं खुदा ने, the Bible says the wages of sin is, खुदा का रहम चाहिए. the wages of sin is death. The wages of sin is death. Sister Roma, I think we have lost Sister Jawaria there. Can you interpret that? Anyway.
Okay, brother. The wages of yeah. Can you please repeat? I said the wages of sin is death. The wages, the reward of sin is death. The wages of sin is death. और जो गुनाह है उसका जो किनारे हैं वो भी मुर्दा है. So, and many of us, we commit sin today, and tomorrow God still allow us to wake up. Many of us, we are not supposed to sleep and wake up. हम लोगों में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सोना चाहिए और दोबारा उठना नहीं चाहिए, लेकिन खुदा जो है हमें फिर एक दिन मौका देता है कि हम सो के उठते हैं. If not for God's mercy, we shouldn't be sleeping and be waking up, despite all the atrocity that many of us are committing. और बहुत से लोग ऐसे हैं जो गुनाह करते हैं और सोते हैं और फिर जाग जाते हैं. और आए हम सब मिलके वादा करें कि हम गुनाह ना करें, और जब हम सोएं और उठें तो हम गुनाह ना करें. And many of us still has the confidence to be calling the name of the Lord when we know that we have sinned against him. और फिर भी हमें से बहुत से लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस है कि जब हमें पता होता है कि हम खुदा के खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम खुदा को पुकारते हैं. And even despite that, sometimes God will still answer our prayer, despite the fact that we are not pure. जबकि हम पाक साफ नहीं हैं, फिर भी खुदा हमारी दुआएं सुनता है और उनका जवाब हमें देता है. God is very merciful. खुदा बहुत रहम दिल है. So we are going to cry to God today. God, just have mercy on me. और आज हम खुदा से रो के इल्तिजा करेंगे कि खुदाया हम पर रहम कर. God, have mercy on me. Amen. हम पर रहम कर. Two people went into the temple of God to pray. दो लोग खुदा के घर में दुआ करने के लिए गए. One was a Pharisee. और एक फारसी था. The other one was a publican, a sinner. और एक जो था वो गुनाहगार था. The Pharisee was trying to prove to God that he was right. और फारसी जो था वो बताना चाह रहा था खुदा को कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ. But the publican could not even look up to heaven. He said, Lord, have mercy on me. और जो गुनाह कर रहा था उसने आंखें तक नहीं उठाई और खुदा से बस ये कहता रहा कि खुदा मुझ पे रहम कर. And Jesus Christ said, that publican, that sinner that recognized that he needed God's mercy, went home blessed. और वो जो गुनाहगार था वो खुदा इनके सब जब अपने आप को खुदा के हवाले किया और दुआ करता रहा कि खुदा मुझ पर रहम कर, और उसने खुदा की बरकत हासिल कर ली. उसने खुदा से उससे जो है ब्लेसिंग ले ली. At such a time like this, when we have many pollutions around us, we need God's mercy. और जब तक कि आप जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सी गंदगी है, पर हमें खुदा का रहम बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी चाहिए. I want you to tell the Lord, Lord, have mercy on me. और हम दुआ करेंगे कि खुदाया तो हमारे जो है हम पर रहम कर. Blind Bartimaeus, I hope you are praying. Blind Bartimaeus, he said, Jesus, son of David, have mercy on me. और आए और सब मिलके दुआ करें कि खुदाया हम सबको यहूदा के खुदा हम सब पे रहम कर. Why are we calling for God's mercy today? और हम क्यों खुदा का रहम आज मांग रहे हैं? God, give me your grace. और खुदाया मुझे अपना जलाल दिखा. Give me your grace. और मुझे अपना जलाल दे. The grace of our Lord Jesus Christ, the grace to love righteousness, the grace to hate iniquity. Lord, give me that grace that is in you, that help you to overcome sin. Give me the grace. और बहुत ज्यादा जो है हमें तेरा जलाल चाहिए अपनी जिंदगी में, जैसा तुझ में जलाल है वैसे ही हमें भी बख्श. Then you remember that Jesus is in our midst today. और इसी तरीके से जैसे कि यीशु मसीह में जलाल था. And he said, whatsoever you ask God for in my name, I will do. और जो कुछ भी मैं तेरे नाम से मांगता हूँ खुदा मुझे देता है. So tell the Lord, Lord, give me that grace, the grace
that it was in you when you were on the surface of earth, let that grace enter into me now. I need that और grace. जो जलाल खुदा तुझ में था वही जलाल मेरे अंदर भर दे. And the second prayer point is that God help me by that grace. Help me by your grace. और मुझे अपने जो है जलाल से भर दे और वही जलाल मेरी भी मदद करे. Then tell the Lord, I want you to incline my heart. और मैं चाहता हूँ कि खुदा हमारा दिल बढ़ाए. Turn my heart to do your will by your grace. और जो कोई भी तेरे जलाल के मुताबिक तेरा काम है, हम हमारे दिल को तैयार करता कि हम वही काम करें. Look at Psalm 119 verse 36. Psalm 119 verse 36. Psalm 119 verse 36. You can read, Sister Jawaria. Psalm 19 verse 6. 119. 119 verse 6. Then shall I not be ashamed when I have... No. Psalm 119. 119 verse 36. Okay, 136. Incline my heart unto thy testimonies and not to the convexiousness. Read it in Hudu, please. मेरे दिल को अपनी शहादतों की तरह रज्जू दिला, ना कि लालच की तरफ. Amen. So we are going to pray, God, I want you to help me by your grace. Incline my heart by your grace. Incline my heart by your grace. खुदाया मेरे दिल को बढ़ा अपनी शहादतों की तरफ, कि मैं लालच की तरफ ना जाऊं. To hate iniquity, to do the will of God. Lord, turn my heart to do your will. Amen. Then let's pray. I think the network of our sisters. Lord, we must do your will. Lord, help me, help us, help our children. Let there be grace. सादिक बना और मैं सादिक बन के तेरी जो है तेरा जलाल हासिल कर सकूं. Lord, help us to depart from iniquity. और मुझे जो है दुनिया की गहमगहमी से दूर कर दे. Help us to come into righteousness. और मुझे सादिक बना खुदाया. Help us to become righteous. मुझे सादिक बना खुदा. Help us to allow the Lord to have His way in our life. और हमें अपने आप को तैयार करने दे ताकि हमारी जिंदगी की जो राह हो वो खुदा के मुताबिक हो. Help us to allow the Lord to fill us with His Spirit and His truth. और हमें तैयार करे खुदा कि हमारी जिंदगी तेरी पाक रूह से भर जाए. Tell the Lord, fill me up, Lord, fill me up. और खुदा मुझे भर दे. So I want you to fill me with your spirit and truth. For God is looking for them that will be worshiping Him in spirit and in truth. Lord, fill me up. और खुदा मुझे अपने पाक रूह से भर दे ताकि मैं सच्चाई के साथ चल सकूं. And do your works in my life. और मैं और तेरे काम अपनी जिंदगी में कर सकूं. Destroy the works of devil in my life. और शैतान के सारे काम मेरी जिंदगी खत्म कर दे. Let everything that represents darkness in my life be destroyed. और जो कोई भी शैतान के काम है मेरी जिंदगी से उनको निस्तो नाबूद कर दे. For this reason the Son of God is manifested so that He might destroy the work of devil. Destroy every work of devil in our lives. और यीशु मसीह के अजीम नाम में हमारी जिंदगी से सब शैतान के काम जो है इनको खत्म कर दे. Thank you Jesus for answer to prayer. और यीशु मसीह हमारी इन दुआओं का जवाब दे. आमीन. In Jesus name we pray. और यीशु मसीह के नाम में आमीन. Amen. Thank you very much, Sister Jawaria, for the interpreting. I will hand over to my pastor now, Pastor Joseph Akinlolu. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. We are going to encourage ourselves this afternoon from the book of Joshua. Joshua chapter 1. The book of Joshua chapter 1.
Joshua chapter 1 verse. I will read from verse 5. But before that, let's just do a quick background of Joshua. Joshua was a man that was following Moses. जोशुआ जो यशवा जो था वो मूसा के जो है ना मूसा की पैरवी करता था. In our own words, we can say Joshua was an apprentice learning how to serve God and to do the will of God through Moses. और हम अपने अल्फाजों में ये कह सकते हैं कि जो यशवा था वो मूसा से सीख रहा था कि किस तरीके से खुदा को हमने सर्व करना है. Also, we can call him to be a disciple of Moses. और आप ये कह सकते हो कि वो मूसा का शागिर्द था. So, and we saw that after Moses has finished his work, Moses died. He was the one that continued the work. और जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब मूसा वफात पा गया तो इसी तरीके से यशवा ने जो है मूसा की जगह काम करना शुरू कर दिया. So Joshua saw a lot from Moses. और यशवा ने जो कुछ भी सीखा वो मूसा से सीखा. Not only seen, he learned a lot from Moses. और उन्होंने जो है उसी की सरजमीन पे काम किया. And he got a lot from him. और खुदा भी जो है उससे बहुत खुश था. When I mean he got a lot from him, it's not like properties. He got God's anointing through Moses. और खुदा ने ये नहीं कि जब उसको प्रॉपर्टीज दे दी, खुदा ने जब उसको बरकत दी तो वो मूसा के थ्रू उसको बरकत दी. And also, we never saw anything that he did that was bad when he was working with Moses. और जब हम ये देखेंगे कि जब यशवा मूसा के साथ काम कर रहा था तो कभी भी यशवा ने कोई गलत काम नहीं किया था. So he served the man of God. He served God through Moses. He served very well. और उसने बहुत अच्छा खुदा को जो है सर्व किया, खुदा की खिदमत की. So I want us to learn from Joshua how he served God, and also we must learn and serve God faithfully. और हम भी यशवा से सीखेंगे कि किस तरीके से हम अजीम खुदा को अच्छे तरीके से जो है वो उसकी खिदमत कर सकते हैं, उसको सर्व कर सकते हैं. Because of what he did, that was why God found him to be faithful to continue the work after Moses had gone. और जब उसने देखा कि वो बहुत ही जो है फेथफुल है, बहुत ही ईमानदार है. God did not give the position to somebody else. He gave it to Joshua for a reason. और खुदा ने किसी और को मौका नहीं दिया, उसने जोशुआ को मौका दिया क्योंकि उसके पीछे उसकी कोई वजह थी. And the Lord will help us as we desire to serve him in truth and in spirit in Jesus name. Amen. और खुदा हमें भी इस तरीके से मौका देता है जैसे कि हम भी खुदा के पाक रूम में खुदा की जो है तमजीद कर सकें और खुदा को जो है सर्व कर सकें. Now I will read from verse 5, Joshua chapter 1 verse 5. He says, "There shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life. For as I was with Moses, so will I be with thee. I will not fail thee nor forsake thee." यमान में उसके लुबान से लेकर बड़े दरिया यानी दरियाए फरात तक हथों का सारा मुल्क और मगरिब की तरफ से बड़े समंदर तुम्हारी हद होगी. Praise God. Hallelujah. See, God knows all things. He knows the heart of Joshua. So God had to give him this charge, this encouragement. और खुदा यशवा को जानता था, इसीलिए खुदा ने उसको इस चीज का इंचार्ज बनाया और ये हदें मुकर्रर की उसके लिए. So we ourselves, we need this charge, we need this encouragement, every one of us. और हम सबको भी चाहिए कि हम ये चार्ज खुदा से ले सकें. So let's put ourselves in the place or in the position of Joshua, that God is talking to us as he was talking to Joshua. और जिस तरीके से खुदा यशवा के साथ बात कर रहा था, इसी तरीके के साथ जो है खुदा हमारे साथ भी जो है बात करे और हम भी खुदा को इसी तरीके से सर्व करें जिस तरीके से यशवा ने किया था. Now we are going to break this verse 5. We are going to break it down to apply to us. We are going to break it down.
और हम जो है अब इसके बाद पढ़ेंगे। So God knows that there were going to be situations that would stand against him, that would discourage him. God knew, so he was telling him to watch out for these things. और खुदा को पता था कि बहुत सी ऐसी सिचुएशंस भी आएंगी जो कि वो उसके खिलाफ जाएंगी। Many of us, as we are now, presently now, we have a lot of things that is against us, that is charging against us. But God is telling us, be strong. और खुदा इस तरीके से हमें बताएगा कि आपको किस तरीके से मजबूत होना है। As God was with our Lord Jesus Christ when he was here on earth, he's promising us he will be with us. Amen. और जिस तरीके से खुदा हमसे वादा करता है उसी तरीके से खुदा हमारे साथ होता है। We are in different countries as we are here, and we have different challenges all over the place. So God is saying, no matter where you are, I will be with you. और इसका कोई मकसद नहीं कि आप कहाँ पे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खुदा आपके साथ है। We have different challenges. Some of the challenges may be health issues, money issues, marriage issues, friends issues, family issues. God says, don't worry about them, I will take care of them. Amen. और बहुत से लोगों को बहुत से मसले मसाइल हो सकते हैं, जैसे कि उनकी शादीशुदा जिंदगी में मसले हो सकते हैं, कारोबार में मसले हो सकते हैं, काम में मसले हो सकते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में सेहत के मुतालिक मसले हो सकते हैं, लेकिन खुदा ने कहा है कि घबराओ मत क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। Moses had the same issue, but God was with Moses. Moses was successful. और मूसा के साथ भी यही मसला था, पर लेकिन मूसा के साथ खुदा था। And we saw that God never failed Moses. Moses never failed in his assignment with God. Everything he needed, God provided. और मूसा ने जो कुछ भी खुदा से मांगा, खुदा ने उसको दिया है। When Moses needed to go and see Pharaoh, to tell Pharaoh, let my people go, God was with him. और जब भी फारसी के साथ जो है फरौन के साथ गया मूसा के साथ, तो पर खुदा मूसा के साथ था। When he needed to show miracles to Pharaoh, to make Pharaoh know that it is God that sent him, he did a miracle. और जब भी फरौन के पास गया, खुदा ने मूसा को ताकत दी और मूसा के जरिए खुदा ने जो है फरौन को दिखाया कि वो कितना जो है ताकतवर है। So whatever miracles we need as we are sitting here this afternoon, God knows we need those miracles. We will make them happen in our lives in Jesus' name. Amen. और जहाँ कहीं पे हम बैठे हुए हैं, खुदा को बहुत बेहतर तरीके से पता है कि हमें मौजज़े चाहिए। So let's not be discouraged. Let's not be wearied. We are human beings. Challenges that come to human beings will come to us, but God has given us victory already. Amen. और हमें मायूस नहीं होना चाहिए, ताकि हम जो है मायूस ना हों और एक दूसरे की मदद करें। God said to him in verse 6, he says, be strong and of good courage. Be strong and of good courage. जो है खुदा ने कहा है कि आप जो है हौसला रखो और जो है हिम्मत रखो और हौसला रखो और डिस्करेज ना हो, मायूस ना हो। Now, which means that there are bad courages. People can have bad courage. People can have, bad courage to do bad things. Can have, strength to do bad things. But God says, have strength, have courage to do what is right. और खुदा से दुआ करें कि खुदा मुझे हौसला हिम्मत दे कि मैं अच्छी चीजें कर सकूं। बहुत से लोगों के अंदर बुरा हौसला भी होता है, जो कि बुरे काम करने का हौसला रखते हैं। So God was telling Joshua, you are now going to lead these people of Israel, to the promised land. So don't worry, everything that you need to do, I will give you strength, I will give you wisdom, I will give you everything you need. So be encouraged. वादे की सरजमीन पे खुदा ने यशवा को कहा कि मैं तुम्हें हिम्मत दूंगा, ताकत दूंगा, और जो है ताकि तुम ये जो खुदा के साथ वादे हैं वो पूरे कर सको। And one of the things that Joshua had to do was that, the people of Israel, they were so many, they were in millions. They were about 3 million, if not more. He had to divide the land for every one of them. It's a great task. God said, don't worry, I will help you to do it. और इस्राएल के लिए जो जगह बनानी थी, वो 3 मिलियन के नजदीक लोग थे, लेकिन खुदा ने यशवा को कहा कि घबराओ मत, मैं अरेंज करूंगा तुम्हारे लिए। So God knows that people are going to come with so many situations, family situations. Friends are going to come, but as they come, I will give you wisdom to deal with them. और उसको खुदा को पता था कि बहुत से मुश्किलात पेश आने वाली हैं।
So God is encouraging us this afternoon, whatever it is that is around us, God is on top of the situation. Amen. चाहे बहुत सी मुश्किलात आए, लेकिन फिर भी खुदा उन सबसे बड़ा है, उन मुश्किलात पे सबसे बड़ा खुदा है, वो उन मुश्किलात से हल निकाल सकता है. And God says in the latter part of verse 6, He says, I have the land which I swore to give unto thee, I will give you this land. So whatever it is that God has promised you, hold on to His promise. He can never fail. He will never fail. He will do it. और जो भी खुदा ने वादा किया है, खुदा वो वादा पूरा करेगा. There is a reason why God is keeping us alive. और हर चीज के पीछे एक वजह होती है, और इस चीज के पीछे भी एक वजह है कि खुदा ने हमें क्यों जिंदा रखा है. It's to give Him glory. It's for our life to attract other people to Him. ताकि हम उसको जलाल देते रहें. So we must not fail Him. और ताकि हम उसको फेल ना कर सकें, नाकाम ना कर सकें. In verse 7, that's what we're going to stop. In verse 7, it says, only be thou strong and of good and very courageous, that thou mayest observe to do according to all that the law which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper wherever thou goest. तो फकत मजबूत और निहायत दलेर हो जा के एहतियात रख के उस सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया. उसने ना दाहिने मुड़ने और ना बाएं, ताकि जहां कहीं तू जाए तुझे खूब कामयाबी हासिल हो. Praise God. Hallelujah. So the secret of our success, the secret of what God has said to us from verse 5, verse 6, verse 7 is for us to obey Him. If we obey Him and do His will, all those promises will come. 5, 6 और 7 में आपने यही बताया गया है कि जब आप उसको ओबे करते हो, आप उसकी बातें मानते हो, तो वो आपकी मदद करता है. And the things that will make us not to obey are things that are very, very physical to us. Our friends, family members, challenges, whatever they are, whatever the names are, those are the things. But God is telling us, leave those things to me. I will take care of them. और ये सारी चीजें मुझे अता कर, ताकि मैं जो है खुदा को और ज्यादा सर्व कर सकूं. So Joshua was being told that he should follow the law of the Lord. We should follow the Bible. We should follow the law of God. We should follow what we have been taught from the Bible, and we will be successful. Every other thing God will take care. और आए हम सब ये सब मिलके पढ़ें जो खुदा का पाक कलाम खुदा ने हमें दिया है, हम वो सब खुदा का पाक कलाम पढ़ें. So this afternoon we are going to pray and we are going to tell God. और God आए has हम touched us. इस दोपहर मिलके पढ़ें. He can never fail and He will not fail. Amen. और वो कभी फेल नहीं हुआ और ना कभी हो सकता है. So as He was with Moses, He was with Joshua, He is also with us. Amen. और जैसे मूसा के साथ था, यशवा के साथ था, वो हमारे साथ भी है. So we are going to close our eyes. We are going to thank God first of all for sending His word unto us, the words of healing. और आए हम सब मिलके आंखें बंद करके खुदा का शुक्र अदा करें. Because the Bible says He sent His word, and His word healed us and delivered us from every form of destruction. और जो कोई भी मुश्किलात हों, उनको जो है हम दुआ करें कि जो कहीं भी हमारी जिंदगी में मुश्किलात हों, खुदा उनको ठीक कर दे. So let's thank God for sending His word to us this afternoon. Thank you. और आए हम और हमें इनकरेज करने के लिए भी जो खुदा ने आज हम सबको इकट्ठा किया है, बुलाया है, आए हम सब खुदा का शुक्र अदा करें. So let's tell the Lord, let's make a promise to the Lord that, Lord, I will serve you. I will do your will. Lord, help me to do your will. Like you have charged Joshua. Well, Lord, I surrender to you this afternoon. Help me, Lord. Help me. आप अपना सपोर्ट आपको खुदा करती हूँ या करता हूँ कि जैसे तूने मूसा और यशवा की मदद की, इसी तरीके से मेरी भी मदद कर. Now you are promising to help me, and you can never fail, Lord. Help me to trust you. और खुदा मेरी मदद कर ताकि मैं तुझ पे और यकीन रख सकूं. Every challenge, every situation that is not pleasant around me, I submit them unto you. I know you will change them for my good.
और मैं चाहता हूँ कि जो कुछ भी मेरी जिंदगी में अच्छा नहीं है तो उसको अच्छे में तब्दील कर दे, और मुझे तुझ पे यकीन है कि तू मेरी जिंदगी को अच्छा बनाएगा। We know what we are going through, whatever it is that we are going through that is dragging you back from following the Lord, that is making you not to follow the Lord the way He wants. Tell the Lord that the Lord will take care of it. और खुदाया तू हमसे अपने कदम पीछे नहीं करता, इसलिए खुदा हम दुआ करते हैं कि तू हमारे साथ रहे। Joshua walked with Moses. He saw all that Moses went through. He saw the challenges. So God had to encourage him, to be strong, that as he was with Moses, He will be with him. और इसी तरीके से जिस तरीके से उसने अपने वादे मूसा के साथ पूरे किए, यशवा के साथ किए, हमारे साथ भी पूरे करे। So I want you to go to the Lord and tell the Lord personally, what is it that you are facing? Tell the Lord what is it you are facing. Is it a health challenge? Is it finances? Is it marriage? Is it your own personal life? Whatever it is, tell the Lord, Lord, these are the things I'm going through. Help me. You have promised to help me. You can never fail. आप खुदा के आगे अपनी मुश्किलात रखें, चाहे वो आपकी शादीशुदा जिंदगी की हैं, रुपए पैसे की हैं, सेहत की हैं, जिस किस्म की भी आपकी जिंदगी में मुश्किलात है, खुदा के सामने रखें और खुदा से इल्तिजा करें कि खुदाया मेरी परेशानियों को खत्म कर दे। Father Lord, I've heard your word. I believe your word. I'm strengthened by your word. I'm encouraged by your word this afternoon. Help me, Lord. Help me never to be weary. Help me never to be discouraged. I believe your word. अल्फाजों से बहुत ज़्यादा जो है, let your word heal me. Let your word deliver me. Let your word set me free. Let your word strengthen me. Deliver me by your word. Strengthen me by your word. Encourage me by your word. अपने अल्फाजों से मुझे निजात बख्श है खुदाया। I have seen the examples of Joshua and Moses. They were successful by your grace, Lord. Let me be successful in this Christian journey, Lord. Let me be successful. Help me. Every challenge, oh God, that is facing me, I submit them unto you. और बहुत से मुश्किलात आती हैं, बहुत से चैलेंज आते हैं हमारी जिंदगी की, हमारी उन चैलेंजेस में से हमारी मदद कर रहे खुदाया। Because the Bible says, cast your burdens upon the Lord and He will take care of it. Lord, I cast my burden to you, Lord. Help me to take care of it. You have never failed, you will never fail. तो खुदाया तो अपने कदम हमसे पीछे मत कर, तू कभी भी फेल नहीं हुआ और ना कभी होगा। You care for me, Lord. So cast your burden upon the Lord, for He cared for you. I know you care for me. That's why you're telling me all these words. I receive your word. और खुदाया तू जो है हमारा ख्याल रखता है, इसीलिए मैं जो है दुआ करता हूँ कि आगे भी हमारा इसी तरीके से ख्याल रखता रहे। Thank you, living God. Thank you, righteous God. Thank you, eternal rock of ages. May thy name be exalted. Let us tell the Lord, Lord, remove every love for sin in my life. Every love for sin. Everything that is dragging me to sin, Lord, remove it. Every attraction to sin, Lord, remove it. Every attraction to worldliness, remove it. Every attraction to lies, to laziness, remove it. To prayerlessness, remove it. और जो कुछ भी गुनाह हमने किया हमारी जिंदगी से, वो निकाल लिया खुदा, और हम दोबारा ना करें। In Jesus Christ's name we are praying. Amen. यीशु मसीह के नाम में हम मांग लेते हैं, आमीन। Our Lord and our God, we are grateful. We thank you. We thank you for your word. Thank you for sending help unto us. Thank you for sending your word unto us. Thank you for not being silent concerning us. Lord, you have encouraged us this afternoon like you encouraged Joshua and Moses, and they were successful. Lord, help us to be successful in the name of Jesus Christ. Amen. Lord, we surrender unto you. The grace, oh God, to trust you. Oh God, totally, Lord, we receive in the name of Jesus Christ. Amen. Lord, Moses, Joshua, they were successful because they walk with you. Lord, help us to walk with you. Amen. Whatever challenge, whatever situation that we are going through, we surrender unto you, Lord. We know that you take care of us in the name of Jesus Christ. Amen. Because your word says, oh God, that we should cast all our bodies, oh God, upon you, for you care it for us. Lord, we have no doubt, oh God, that you care it for us. Lord,
We depend on your word. Show mercy upon us in Jesus' name. Every care of this world, every situation that is buffeting us, left, right, and center, Lord, give us victory in the name of Jesus Christ. Amen. Every situation that will come, oh Lord God, that will come across through friends, through family, through place of work, whatever it is, Lord, we believe you for victories in the name of Jesus Christ. Amen. Father, strengthen us. Amen. Help us, oh Lord. Amen. Lord, encourage us by your word. Amen. Let every situation, oh Lord God, that is not giving you glory in our life, Father Lord, let them, Father Lord, be removed right now in the name of Jesus Christ. Amen. Lord, we depend on you. As we continue, Father Lord, continue with us. Amen. Strengthen us. Let this words, oh God, that we have had today, not stand against us in the day of judgment. Amen. Show mercy upon us. In Jesus Christ's name, we are prayed. Amen. 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 Thank you, sir. Thank you very much, Thank Pastor. you, everyone. We appreciate you, sir. Thank you very much. Thank you. Amen. Thank you so much. We thank God for the message. We thank God for the prayers, brethren. Let's have faith in God. God has answered our prayers. Before I hand over to Pastor Sama to round up for us, just I want to encourage us, please let us do our master classes. The CYC Academy, the master classes, let us take them and be certified member of CYC. And let me tell you the good news. One of our teachers have transcribed the master classes to voice. So you can listen to the voices now, to the master classes now. So all you just need to do, listen to the master classes and then go to the website to do the assessment and get your certificate, which is very good. Lord will help us in Jesus' name. Amen. And let's please, next Tuesday, let's invite more people. Let's be increasing. Let's work with the Lord. Let's try to gather the youth together. Let us know one another. Let us encourage one another. We cannot do the work alone. Let us work together. And then together we stand. The Lord will help us in Jesus' name. Amen. Amen. So, Pastor Samuel, you can hand up for us. Okay, let us pray together. Let us pray. Father, we thank you. We magnify your name. We exalt your name. Your name be glorified. Thank you, Lord, for this precious moment, precious, powerful word of God. Bless your servant. Bless all of those who listen this word. Make them ready. Prepare their heart, their minds, their thoughts, and they will be act on these words. Bless everybody in Jesus' name. In Jesus' name. Lord, I destroy all the plan of the devil. I declare the power of Holy Spirit. Holy Spirit, come over and take charge of everything. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Oh Lord, release your power. Oh Lord, release your power. And day by day, we will be blessed by your work of your ministry. In Jesus' name. Your kingdom will be expanded and many souls will be saved. And we will be blessed. Your mighty name. Lord, bless everybody. Bless the preachers. Bless all of the person who are administrating these things. And bless everything. And this work will be continued. Many more people come, hear the word of God, and bless for their spiritual life. Bless everyone. In Jesus' name I pray. Amen. 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 Thank you very much. Let's share the grace. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen.